start with the first numerical. So it says symmetrical eye section has the following dimensions: flanges 150 into 20 mm, web 300 into 10 mm. Find the maximum shearing stress developed in the section of the beam for shearing force of 100 kilonewton. Okay, so the eye section, again I drew the eye section here. It will be as given in this diagram here. And let us see how we can find the maximum shearing stress developed in this eye section. So let's get started with this numerical. Now for this numerical, eye section is given as shown in the figure below. And for this eye section, we need to find a maximum shearing stress, and the given is they have given a shear force. So shear force S is given equal to 100 kilonewton, which will be equal to 100 into 10 raised to power 3 Newton. Right, now we need to find a maximum shearing stress. So let us first start by finding its moment of inertia. So how do we find moment of inertia? I xx. Okay, so this is the eye section. Now if I make this eye section to a hollow rectangular section by drawing this imaginary line here, ये symmetrical eye section है, तो ये symmetrical eye section को I can make a hollow rectangular section. So for hollow rectangular section, to find Ixx, the formula is 1 by 12 BD cube of the outer rectangle minus BD cube of the inner rectangle. So 1 by 12. Now what is B for the outer rectangle? Outer rectangle ये होगा, तो B उनका कितना है? B 150 into D कितना है? D यहाँ से पूरा यहाँ तक आएंगे. So D is 20 plus 300 plus 20. This will be 340 cube. This is B into D minus, अब छोटा B into D करेंगे तो inner rectangle will be, let me name this as, ये point को P, ये point को Q, R, S. So ये point को मैंने पूरा join किया तो it will be a inner rectangle, right? So inner rectangle का B कितना है? B is यहाँ से यहाँ तक 150, but ये बीच पे वेब पोर्शन है, right? This is solid, तो इसको अगर हमने हटाया तभी तो ये rectangle बनेगा. So we need to take this web portion out. So how will we take? We will just minus the web. Web का thickness is 10, so minus 10 into depth कितना है? From Q to S, the depth of this inner rectangle is 300 mm. So 300 cube. So from here you will get Ixx equal to 1.763 into 10 raised to power 8 mm raised to power 4. So this will be the moment of inertia. Now let us start by finding Q1. What is Q1? Q1 is shear stress at the bottom of the flange. Right? अब मैं ऊपर से कंसिडर किया तो बॉटम ऑफ द फ्लेंज यहाँ पर आएंगे. सो मेरा बॉटम ऑफ द फ्लेंज यहाँ पर हुआ, तो मुझे ये पोर्शन पे Q1 फाइंड करना है. तो कितना होगा? हेयर Q1 will be equal to SA y bar divided by I into B. So how much is S? S is equal to, given यहाँ पर है 100 into 10 raised to power 3 into area of this flange portion. यहाँ तक हमें फाइंड करना है तो, बट वी नीड टू टेक पूरा फ्लेंज.
तो एरिया कितना आएंगे इसका, एरिया विल बी 150 इंटू 20 फ्लेंच का, राइट। देन वाई बार कितना आएंगे आप, हाउ विल यू फाइंड वाई बार, इसके आधा, यहाँ पर ये फ्लेंच पोर्शन का आधा तक फाइंड करना है, इतना न्यूट्रल एक्सिस ये है, तो ये पोर्शन आपको फाइंड करना पड़ेगा, दिस विल बी वाई बार। तो हाउ मच दिस वाई बार विल बी, दिस वाई बार विल बी इक्वल टू टोटल यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ इज 170, सो 170 माइनस, अब यहाँ से हमें इतना माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से भी सिर्फ हमें इतना आधा लेना पड़ेगा, तो ये इतना ही पोर्शन कितना होगा, 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 2। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। डिवाइडेड बाय I, moment of inertia I, we got 1.763 into 10 raised to power 8 into, अब B कितना लेंगे, B width of this flange is equal to 150 mm, so into 150. So from here you get Q1 equal to 1.815 Newton per mm square. Okay, now let us find Q2. Q2 is equal to shear stress at the junction. Okay, so this will be equal to, Q2 will be equal to Q1 into अब ये जंक्शन पोर्शन पे ले रही हूँ, तो ये पोर्शन पे ले रही हूँ, सो टोटल विथ क्या है, यहाँ से ऊपर से, इट इज़ द जंक्शन बिटवीन दिस फ्लेंज एंड वेब का जंक्शन है, तो फिर वेब का विथ कितना है, टोटल विथ वेब का इज 150 divided by what is the width of this web, it is 10, so divided by 10. So Q1 is equal to, if I cancel this one, I'll have Q1 was equal to 1.815 into 15. So from here you will get Q2 equals to 27.22 Newton per mm square. Okay, now let us find additional shear stress due to the web area above neutral axis. So Q additional is equal to additional shear stress due to web area above neutral axis. So this is Q additional. Okay, now how do we find Q additional? Q add will be equal to SA y bar by IB. Okay, now ये कैसे find करेंगे? Now it says additional shear stress due to web area. Web area ये है, ये area है web area above neutral axis. अब neutral axis, this is neutral axis. अब above this neutral axis I have this portion, so it is signifying to this portion here, इतना portion. So इतने portion के लिए how will we find? S will be equal to 100 into 10 raised to power 3 into area, सिर्फ आपको area of this इतना portion का find करना है, so इतना portion का area कितना होगा, total depth is 300, so
From here to here it will be 150 mm. So 150 into this thickness is 10. So area will be 150 into 10 into y bar. अब y bar how will you find? सिर्फ इतना पोर्शन का आधा लेना है, तो इतना ही लेना है आपको. तो कितना होगा? 150 divided by 2. So it will be 150 divided by 2 divided by I is equal to 1.763 into 10 raised to power 8 into B. Width कितना है इसका यहाँ पर? Width is equal to 10 only. So into 10. So from here Q additional will be coming equal to 6.381 Newton per mm square. Now let's find Q max. So now maximum shear stress, which is Q max, will be equal to Q2 plus Q at. This is the formula. Now from here, how much did we get Q2? Q2 came 27.22. So 27.22 plus additional shear stress came 6.381. So from here you get equal to 33.6 Newton per mm square. So this is the maximum shear stress developed in the section. So अभी यहाँ पर सिर्फ maximum shear stress तक ही बोला है. In case if you had to find average shear stress for this kind of I section, तो कैसे find करेंगे? Q average will be equal to S by A directly. So S कितना है? S will be equal to 100 into 10 raised to power 3. एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ दिस आई सेक्शन. अगर हमने ये आई सेक्शन को हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाया तो उस पर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का कैसे फाइंड करते हैं हम? नहीं तो इफ़ यू फॉरगेट अबाउट दैट, विल जस्ट टेक इट एज फर्स्ट सेक्शन सेकेंड सेक्शन, राइट? और ये फर्स्ट सेक्शन और सेकेंड सेक्शन का एरिया कितना होगा? यहाँ पर दो सेक्शन है 1 and 2, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 2 करती हूँ. 2 into area is 150 into 20 प्लस अब सिर्फ एरिया वेब का लेना है. वेब का एरिया कितना होगा? 300 into 10. सो वेब का एरिया विल बी 300 into 10. एरिया विल बी दिस मच. ओके, अगर नहीं तो आप हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का फॉर्मूला लगा के एरिया फाइंड करते हो तो भी it will be fine. So from here Q average will come equal to 11.11 Newton per mm square. But अभी ये question पे Q average is not asked, but in case if you are asked, you can find it in this manner. Okay, now let us draw the shearing stress distribution diagram. Right, यहाँ से वेब पोर्शन है तो you will draw it in this manner, and then it will go straight, and then this is the neutral axis line, so it will be maximum here, and then it will start reducing. So here also I have bottom, I have a flinch. It will go in this manner, then straight, and then maximum at the neutral axis. So here I have this line, here is the total from here to here, it is Q max, which I got equal to 33.6
6, and this portion here is Q1. Here I have Q2, again Q1, here Q2. So how much was Q1? 1.815, Q2 27.22, here 1.815, 27.22. And what is this? This is a shear stress distribution diagram in Newton per mm square. Since मैंने यहाँ पर unit नहीं डाला है, तो you put it in this manner here. So I hope this numerical is clear. This is the last numerical for today's session. So as you can see, this is a T section, and T section comes under unsymmetrical section. So let us read its statement. A T section having flanges 200 mm wide and 40 mm thick and web 40 mm wide and 200 mm deep is used as a beam. It is subjected to a shear force of 75 kN at a particular section. So calculate stresses at bottom of the flange, junction of the flange, and neutral axis. So we need to find at 3 places, and this is the unsymmetrical section. So let us see how we can find the shear stresses at these 3 particular places. So let us get started, and this is the last numerical for this unit. So I hope till now the whatever numericals we have done in this unit, everything is clear. So let's get started with this numerical. Now for this question, a T section is given, right? So the total dimension of T section is given as shown in the figure below. Now for this we need to calculate the shear stress at, so what we need to calculate? Number 1, we need to calculate shear stress at number 1, first one, bottom of flange. Number 2, junction of the flange and web. Junction of the flange and web. And number 3, at neutral axis. So for this 3 portion we need to find the shear stress at these 3 parts. Now what is given? The given is, they have given a shear force. So the shear force, intensity of shear force given is S is given equal to 75 kilonewton, will be equal to 75 into 10 raised to power 3 Newton, right? Now let us start by finding the Y bar. How do we find Y bar? Because why are we finding Y bar? So that we can find moment of inertia. Okay, so Y bar will be equal to, now I'm gonna make this section as section number 1 and this flange portion here section number 2. So I'm gonna, the formula is A1 Y1 plus A2 Y2 divided by A1 plus A2, right? So how much is A1 for this web portion here? It is 40 into total depth is 200. So 40 into 200 into Y bar. इसका Y bar कहाँ पर होगा? इसका total depth 200 है. So Y bar will be at half of it, of this section. तो half बोला तो here, right? This one, this much is your Y1. How much will this be? It will be 200 divided by 2. So this is your A1 Y1 plus A2
area 2 is again 40 into 200. So again we have 40 into 200 into, now y2, आपको y2 यहाँ तक इसका ये पोर्शन जो है सेकंड सेक्शन का जो फ्लेंच पोर्शन है उसका y2 will be coming from all the way from bottom till this point, this will be y2. तो कितना होगा y2 यहाँ से यहाँ तक इस वेब पोर्शन, तो वेब का हाइट कितना है 200, सो 200 प्लस, अब मुझे जब फ्लेंच पे पहुंच गई फ्लेंच का आधा ही लेना है, सिर्फ हाफ, तो हाफ कितना होगा 40 डिवाइडेड बाय 2, राइट, डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया 40 into 200 plus 40 into 200. So from here y bar will be coming equal to 160 mm from bottom. Okay, so bottom मतलब ये bottom से at 160 mm, so at around here itna portion will be, y bar will be equal to 160 mm. Okay, now let us find moment of inertia. So to find moment of inertia for this section we need to use a parallel axis theorem. So Ixx will be equal to Ixx1 of this section 1 plus Ixx2 of the second section. Now how much will Ixx1 be? Ixx1 will be BD cubed by 12 plus A1 H1 square. This is for Ixx1. Ixx2 के लिए BD cubed by 12 plus A2 H2 square. Okay, now let us put all the values. Now for the T section, ये T section के लिए first section के लिए B is 40, D is 200 and second section के लिए B 200 है, D 40 है. So remember those values. I'll just put it here. First section के लिए B 40 है, D depth 200 cube divided by 12 plus area will be 40 into 200 into, now H1, how much will H1 be? Okay, so H1 will be equal to y bar minus y1, right, and H2 similarly will be equal to y bar minus y2. Y bar kitna mila? Y bar we got 160, so 160 minus y1 kitna hoga for this section, तो यहाँ पर we already found y1 here, which is equals to 200 divided by 2 is equals to 100 square. So this is h square, right? This is over plus for the second section B is 200 and D is 40 cube divided by 12, right, plus area is again 40 into 200 into, now H2 kitna hoga, y bar minus y2. Y bar kitna mila? 160, so 160 minus y2 kitna hai? 20 plus 40 divided by 2 kitna hoga? This is y2, यहाँ पर ये y2 है इतना, right, so kitna hoga? 20 plus 40 by 2 will be 220, so 220 the whole square. So ये हुआ Ixx2 का values. So if you solve all of these you will be getting Ixx1 का value आएंगे 55.467 into 10 raised to power 6 and Ixx2 ये solve करेंगे तो you will get 29.9
867 into 10 raised to power 6. Now adding both these values, you will get Ixx equal to 85.334 into 10 raised to power 6 mm raised to power 4. So you will be getting this value. Ixx value is coming this much. Now let us find first one, shear stress at the bottom of flinch, the first one. Okay, so number one, shear stress at bottom of flinch will be equal to bottom of flinch. flinch पोर्शन क्या है? ये पोर्शन है, राइट? तो ये बॉटम फ्लिंच का बॉटम कहाँ पर आएंगे? दिस इज द फ्लिंच पोर्शन, राइट? एंड बॉटम ऑफ फ्लिंच बोल रहे हैं, तो बॉटम ऑफ फ्लिंच कहाँ पर आएंगे? दिस इज द बॉटम ऑफ फ्लिंच, राइट? तो उस पर हम फाइंड करेंगे, तो हियर आई विल हैव Q1. Q1 will be equal to SAY bar by IB, right? Now यहाँ से S कितना है? S is shear force which is equals to 75 into 10 raised to power 3. Area कितना होगा? Now area of this flange portion only. Area of this flange portion is 200 into 40, right? Into y bar कितना आएंगे? y bar. So y bar कैसे फाइंड करेंगे? अगर y bar यहाँ के जो फाइंड किया हमने 160 आया, तो रिमेनिंग यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा? टोटल डिस्टेंस इज 240, राइट? टोटल डेप्थ 240 माइनस 160 किया, तो फ्रॉम हेयर टू हेयर यू विल बी गेटिंग इक्वल टू 80 mm, राइट? और अब फिर आपने ये पोर्शन से, ये जहाँ पर फ्लेंच का एंड हो रहा है, ये यहाँ से ये डेप्थ ही फाइंड किया, तो कितना होगा ये? दिस विल बी 40 mm, राइट? अब हमें यहाँ से यहाँ तक का हाइट पे जाना है, यहाँ तक, ये यहाँ तक जाना है. दिस विल बी y bar फॉर फ्लेंच पोर्शन. तो कितना होगा y bar यहाँ पर? इट विल बी कमिंग इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक 40 है, प्लस अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? टोटल ये वेब का डेप्थ इज 40, राइट? सो 40 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो इट विल बी 20. सो 40 डिवाइडेड बाई 2, 20. सो 40 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, यू विल गेट 60 mm. Okay, so y bar is 60. So here you have 60 directly divided by I. How much did we get? Moment of inertia, it came 85.334 into 10 raised to power 6 into B. Now how much will you take B? फ्लेंच का ये width कितना है? 200. So into 200. So from here Q1 will be coming equal to 2.109 Newton per mm square. Okay, now second one, let us find shear stress at junction. Shear stress at junction. So shear stress at junction will be equal to Q2 will be equal to SAY bar by IB. Okay, now here this S will be 75 into 10 raised to power 3. Area will be again same, junction पे find कर रहे हैं, तो junction will be at this portion only. Okay, junction जहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस का लाइन आ रहा है, वहाँ पर ही जंक्शन है उन दोनों का, बिकॉज दिस न्यूट्रल एक्सिस पॉइंट पे सेंट्रोइड लाई कर रहा है फॉर दिस टी सेक्शन. सो इट विल बी 200 into 40 into y bar will again be the same 60, क्योंकि यहाँ तक न्यूट्रल एक्सिस यहाँ तक कर रहे हैं हम, divided by I will be same, right?
I is 85.334 into 10 raised to power 6 into, अब B कितना लेंगे? B ये जंक्शन यहाँ पर, ये जंक्शन पोर्शन पे यहाँ पर पहुँच रहा है तो इट इज कमिंग एट द वेब पोर्शन. तो ये अब वेब पोर्शन का, वेब का विड्थ कितना है? इट इज 40. यहाँ वी आर फाइंडिंग इट एट दिस प्लेस जंक्शन. ओके, सो ये प्लेस पे वी आर हैविंग अ वेब. तो वेब का विड्थ कितना है? इट इज 40. सो वी टेक दिस B here as 40. Okay, so this will be coming equal to 10.5647 into Newton per mm square. So this is the shear stress at junction. Okay, now third one, shear stress at neutral axis. Shear stress at neutral axis will be coming equal to Q max will be coming equal to SA y bar by IB again. So S कितना है? 75 into 10 raised to power 3. Area, neutral axis. Neutral axis is here. Neutral axis. So area will be, how much will area be? Area will be इतना का ही लेंगे हम, तो कितना होगा? इसका डेप्थ इज 160, राइट, और विड्थ इज 40. सिर्फ हम इतना पोर्शन का ले रहे हैं. सो इट विल बी, एरिया विल बी 160 into 40 into y bar will be, अगर इसका यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ 160 है तो इसका आधा, सिर्फ इसका आधा, हाफ will be 160 divided by 2, which will come 80. So here you have 160 divided by 2, okay, which will be 80 divided by I will remain same जो हमने यहाँ पर मिला है, which is 85.334 into 10 raised to power 6 into B width कितना है इसका? ये width is 40, so into 40. So this will be coming equal to 11.25 Newton per mm square. Now let's draw the shear stress variation diagram. Now for this, let me draw the imaginary line. यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस का है और नीचे यहाँ पर जस्ट द वेब पोर्शन के आएंगे. Okay, now as you can see, draw a straight line first, right? अब ये पोर्शन पे you have a web. अगर वेब है तो you go like this, right? और मैक्सिमम यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस जो है, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर आपका मैक्सिमम होंगे. तो फ्रॉम हेयर गो कांस्टेंट, इट विल गो कांस्टेंट एंड देन मैक्सिमम विल कम. एंड देन नाउ सी, ये पोर्शन पे देयर इज नो फ्लेंच पोर्शन, तो फ्लेंच नहीं है तो यहाँ से डायरेक्ट इट विल कम here in this manner. Okay, so here at this point you have Q max, which you got equal to 11.25 Newton per mm square. Now ये point पे will be shear stress at the bottom of the flange, bottom of this flange पे जो आपने find किया है, जो यहाँ पर Q1 आएंगे. Okay, तो Q1 कितना मिला था? 2.109 Newton per mm square, right? और ये portion, right, this portion is shear stress at the junction.
which will be equal to Q2 और Q2 कितना मिला था? Q2 was equal to 10.567 10.5647 Newton per mm square. Okay, and what is this? This is a shear stress distribution diagram. Okay, so I hope this numerical is also clear.